The planet that is hated by 99%, that is Saturn. Saturn is also called Mand, and people in Maharashtra would understand this very clearly. Mand Buddhi, right? So this Mand is the very much associated with Shani. Now, the why the hate is given to Shani is because of classics only. सारी गंदगी की जगह पे शनि रहता है, गधे के ऊपर बैठ के आता है, इसकी शक्ल नहीं देखनी चाहिए सुबह सुबह. All of this is written in Shastras, and that is why this much hate is given to Shani. But Shani, but people forget one thing. Planet will give you result based on your karma. So Shani can be the most beautiful planet in your chart, right? So you need to understand Shani can be good also, right? Now the symbol for Shani is matter and spirit. The combination of matter, what is happening around you, your spirit. So that is the symbol. It is tamasic in nature, airy in nature. Okay. So if you think air, the next thing that should come into your mind is planes. So if I ever step foot on a plane, these belong to Shani. So one of the good things. If you go to a Yama temple, Yam Bhagwan, Yamraj, we go to that temple जहाँ पर उनकी मूर्ति हो, उनका depiction हो. So you instantly activate your Saturn. If you go to garbage dump, outside cities, you will have a garbage dump. If you visit over there, your Saturn gets activated. And if you go to very remote places, like very, very remote, people who do astrophotography, like they go hundreds of kilometers away from cities in the remotest area. These all belongs to Shani. Okay. Cremation ground belongs to Shani. Depleted structures. You would have seen buildings जो कभी पूरी नहीं हुई, complete ही नहीं हुई, depleted structures, abandoned houses, abandoned places, all belongs to Shani. You know, water. Water is related to which planet? Water is related to, it's a very easy answer. Yeah. Moon. And ice is related to, very easy to guess, Saturn. Which is the most isolated or most remote place on this earth? Which is the most isolated and remote place on earth? Antarctica. Completely covered with ice. Now you can make a connection how it is happening. Saturn energy. Okay. Saturn is also related to your clothes, which are old and torn. बीच बीच में वो ट्रेंड चला था ना घुटनों से फटी हुई जीन्स का. Salman Khan used to wear it. So all this torn, distressed clothing all belongs to Saturn. Okay. Your longevity, sorrow in your life, delay in your life, all goes to Saturn. But Saturn is on the positive side, is also the karka of stability. If you have no stability in your life, so basically your Saturn is bad. If you have no sense of duty, your Saturn is bad. So we always want this, right? That we should have a stable life. We should know our duty. We should fulfill our duties, right? We should be very sincere. We should proceed with caution in life. All of this belongs to Saturn. And you see, the people who are the most sincere generally are the most sad people on earth. Both Saturn connection, right? So all are related to Saturn. So your question, like how can you find out your Saturn is good or not? Just ask yourself question. Can you stick to one thing for a long period of time? Can you stick to one thing for a long period of time? Like there are people who go to the same barber shop, get haircut by the same barber, have the same hairstyle, right? Or they will work at the same job
for 20 years, 30 years. If they will have business, or they will say, I have this servant and he's working for me for past 20 years, 15 years, right? 25 years. You would have heard this sentence many times. People would say, ये मेरा नौकर है, पिछले 20 साल से हमारे साथ है, right? So if you have people who have stuck with you for a longer period of time, people, servants, or you have stuck with something for a longer period of time, then your Saturn is good. Otherwise, it is not. One of the shadow planets, Rahu. Rahu, Ketu, Shani, people are scared a lot, but there's nothing to be scared about. Now, Rahu is tamasic in nature, and Rahu is very much similar to Saturn. So you can see good qualities of Saturn and Rahu very similar. But you know who Rahu wants to be? Which planet Rahu wants to be? Can you guess? Easy है, बहुत easy answer है. Yeah, Jupiter. Rahu wants to be like Jupiter. Same aspects, same aspects of Jupiter. Problem is, it is ulta, Manduk Gati. This is an advanced concept, but it wants to be like Jupiter. But it is actually like Saturn. Okay. Now, what is the symbol that is of Rahu? It means your past and future linked with life force. Your past and your future and linked with life force. The only reason you are born is because of Rahu. Not even Sun. Sun is the karka of your soul. Sun is the natural Atma karka. But you are born because of Rahu. This thing you need to understand. Rahu is also a king. Like Sun is a king, Rahu is also a king, but of the opposite side. So all the rebellions are done on the rebellious people. Rebellion is done by Rahu only. If you go to ant hills, in an area where there are ant hills, where there's graveyard, where there are caves, or you go to any Buddhist temple, or you go to any Durga Ma temple, your Rahu gets activated instantly. If you know, all this black magic is done in caves. असली काला जादू गुफाओं में होता है. ऐसे ऐसे आम बैठ के नहीं हो रहा होता. And all of this black magic is happening in caves belonging to Rahu. Right? So very important planet. Similar to Saturn, so all your clothes which are distressed, torn off, belongs to Rahu. Rahu is very important factor for foreign travel, for foreign things. So if you want to wear foreign brands, you want to use foreign things, you want to go to foreign, Rahu is very, very important for you. Gambling also. Many people are addicted to gambling. Small gambling, big gambling, right? So that is all belongs to Rahu. बचपन में भी किया होगा ना, उस खंबे तक 3 सेकंड में भाग के जाऊंगा, नहीं तो मेरे साथ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा. People have done this. Many children think of this, right? ये स्कूल में पंखा गिरेगा तो किसके ऊपर गिरेगा? Every person has done this. All of these activities, they belong to Rahu. All the technical education is given by Rahu. Satta is gambling. Hanji, all the satta, everything is Rahu. Okay. Sin is also related to Rahu. Fear is also related to Rahu. Moles, जो तिल हो जाते हैं लोगों के मुंह पे, हाथ पे, कहीं ना कहीं पे, बॉडी पे will have moles. That is also of Rahu. Okay. Any suddenness, if things happens very quickly in a sudden manner, again, who is responsible? Mr. Rahu. So Rahu is the, some say, in English text you'll find it as dragon head also. If you have chronic disease in your life, you can say thank you to Rahu. If you have addiction in your life, you can say thank you to Rahu. If you have mental agony, not mental stress, mental agony, then you can say thank you to Rahu. And if you have cats in your life, many people they keep cats as pets. So you can say thanks to Rahu. One of the remedies to feed cats. So people who have good Rahu, they will
be surrounded by cats. They will see cats often. Cats will be in their life. Let's talk about Ketu. Ketu is tamasic in nature and is very similar to Mars. We can even say it is better than Mars in some or the other aspect. Ketu is very similar to Mangal. Okay. It is same. The symbol means past and future together. But instead of life force, it is looking for liberation. So Ketu automatically becomes the karka of moksha, liberation, nirvana can be given by Ketu. When you step inside a Bhairav temple, any Bhairav temple you step in, Ketu is instantly activated. When you go to mountains, when you go to a place where there are a lot of termites, Ketu gets activated instantly. All these dual tone clothes, you would have seen this blanket, kambal, black and white kambal. 99% of sadhus have it. Neem Karoli Baba, if you would have seen the photo, he's wearing a kambal, that check kambal, white, black, or white or red color. When is it dual tone colors? These all clothes belongs to Ketu. A black and white belongs to Ketu. Dogs belongs to Ketu. All this black magic, witchcraft, all belongs to Ketu. All this tantra, mantra, yantra, all belongs to Ketu. So you should always go to astrologer who has a prominent Ketu in chart. Why? Because the ruler of tantra, mantra, yantra is basically Ketu. Ketu is the most important planet when it comes to these things. So if you have a good prominent Ketu, we will see these astrologers, they will not fall sick, they will not fall ill after prediction. You will see many astrologers, they will have a lot of health issues. These will not. Because Ketu is the planet of Tantra, Mantra, Yantra. If it's not good, you will never be able to do good Tantra, good Yantra, good Mantra. If you need this, then Ketu is the planet. Ketu is also the planet for surgery. Ketu is also the planet for surgery. If Ketu gets connected with Jupiter, if you give blessing to any person, he will get that blessing. If Ketu gets connected with Saturn, if you curse any person, that person will get cursed. Afflicted moon can lead to health issues after prediction. It depends which is the main driver of astrology in your chart. What is happening to Lagna? I've seen many astrologers with eighth house moon, or moon in Scorpio, not falling sick. So, not a solid rule. There can be chances because moon is also treated as Lagna, but not exactly. If you ever had TB, if you have viral fever, instability in your life, or if you ever had surgery in your life, you can say thank you to Ketu, because all of these things they belong to Ketu. So now you understand these planets are very, very important. Now, once you understand houses, once you understand zodiac, and once you understand these planets, you will get a very good idea of astrology. So we'll finish here today, right? And then we'll continue in the next class. If you have any doubts, go ahead and ask. Otherwise, we'll conclude it. Sir, I have a question regarding to Brihaspati and Shani, Go right? ahead. So Brihaspati, you said that if someone goes to the Brahma temple, which is not available, Hmm. many places, Jupiter get activated. So do it get activated if you go to Shiva temple as well? Jupiter. Like, yeah, like a Dakshinamurti Shiva. Yeah, form of Shiva, it will get activated. If you go to Shiv temple, mostly your sun will get activated because sun is directly connected to Lord Ram and Shivji. Right, But if you right, go to Dakshinamurti Shiva, which is basically the Guru form of Lord Shiva, then yes, right, Jupiter will. But then again, there are very less temple of Dakshinamurti Shiva. right, Basically, right. you will hear him as
form or pictures, but you rarely find a Right. temple of Dakshinamurti Shiva also. See, that is the Hmm. actually that is by design. अब Right. प्रॉब्लम क्या है, ब्रह्मा जी इज वेरी इगोइस्टिक, ठीक है, Hmm. एंड ही इज Right. कंपीटिंग विथ शिव जी ऑन वन साइड एंड विष्णु जी ऑन द अदर साइड. तो व्हाट इज Right, हैपनिंग, sir. वो प्रूव करने के लिए कि मैं भी भगवान हूं, वो वरदान पे वरदान दिए जा रहे हैं कि लोगों को लगे कि Yeah. भाई मैं भी भगवान हूं, मेरे आगे भी लाइन लगे. सॉरी ब्रह्मा जी, बट इनको सिखाने के लिए बताना पड़ता है, ठीक है. तो मेरे आगे भी भक्तों की लाइन लगी रहे, तो इज गिविंग ऑन ब्लेसिंग्स एंड ब्लेसिंग्स एंड ब्लेसिंग्स, ठीक है. Right. अब इसी के चक्कर में कांड हो जाता, या तो शिव Right. जी ब्लेस कर देते या तो ब्रह्मा जी ब्लेस कर देते. प्रॉब्लम बेचारा विष्णु जी झेले जा रहे हैं Right. बैक टू बैक. तो Yeah. वो अवतार लिए जा रहे, अवतार लिए जा रहे, ये दोनों वरदान देने की खत्म नहीं हो रहे. अब उसमें से भी Problematic situation. सबसे इजी वरदान कौन दे रहा है, ब्रह्मा जी. You find out Mhm. the person who has given 99% of वरदान blessings, it is ब्रह्मा जी. ये बोला इनको निकालो Oh, यार सिचुएशन से, okay. राइट. इट इज ऑल दैट लीला कि वो लाइट का पिलर आ गया, फूल हाँ, मतलब गिरा, पहले फूल ने इनको झूठ हटाओ, ये बोल जो दिया. ज्यादा प्रॉब्लम कर रहे हैं तुम. हाँ, तो मतलब ब्रह्मा इज एक्चुअली द मेन गिवर. He'll give you Right. instantly. तो उनके मंदिर भी हटवा दो, इस बंदे को भी साइड करो, प्रॉब्लम यही कॉज कर रहा है. अब Hmm. विष्णु जी ऑल्सो हैज अ लिमिट कि भाई कितने ही अवतार लूं. अब ब्रह्मा जी को नहीं हटाया जाता तो 108 अवतार तो हो जाते अब तक. जी जी जी. और विष्णु जी का सो भी तो दैट इज, ये भी है कि वो देते नहीं है इतने आसानी से, और दे दिया तो मतलब फिक्स्ड होता है उनका, इज फिक्स्ड, तो वो अलग ही कहानी है. 10-15 साल बाद दिया भी तो क्या क्या दिया आज के टाइम पे, जब एज ही 60, 70, 80 है. तो इसके राइट लिए यू विल राइट, तब सी तो टपक जाएगा मतलब. मेजोरिटी मेजोरिटी ऑफ पीपल गोइंग टू शिव जी. राइट राइट राइट. रो पिट के मिल जाएगा. All the movable राइट. signs belongs to Brahma. If you have planets in हम्म. your movable signs, instantly काम हो जाएगा आपका. Right, sir. Sir, one more thing, like you said, if someone go to Yam temple, Shani will get activated. So, like, Hmm. if someone go to like aggressive deity like Ma Kali, is there a same effect? It depends. माँ काली, see, whenever form of Shakti, basically Hmm. your Rahu gets activated, especially Durga Mata. Okay, okay. Yeah. Hmm. And then Shani Ketu, if someone has Shani Ketu and he really cursed somebody from the heart, from the bottom of the heart, that person is Hmm. gone, right, for the six. हाँ, 100%. Wow, that's good. तो कभी भी I have seen that. कभी भी किसी के भी चार्ट में शनि केतु बन रहा है ना, उसको परेशान मत Right. करना. इवन इफ द Yep. पर्सन इज नॉट कर्सिंग यू, बट उसने मन में सोच लिया Yeah. इसकी वजह से हो Do रहा not, है, yeah. देन ऑल्सो यू Do विल not हैव do दैट that. प्रॉब्लम. Right, 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 right. Absolutely. Uh, yeah. Sir, this uh, Shani and Ketu thing. So Shani, like you said, is an abandoned place. People have prominent Shani. They like these old houses, abandoned somewhere in the cold. They love these things, right? They're the prominent Shani. But Ketu also give you isolation. Is there any differentiation between these situations where we are seeing the isolation? Shani and Ketu both cause it, but what is like a differentiation, kind of? So in Ketu's department, it is either I'm 100% in or either I'm Oh, 100% out. So Ketu, right, many people will say Ketu is a saint planet. No, Ketu can be right. the most high performing planet. Ketu will either Mm-hmm. be the elite personality or Ketu will be Right, zero. There is no in right. between. Now, Saturn Highway can or be no in way? between. Yeah, Saturn can Right. be in between, but not Ketu. Hmm. So, Right. either if Ketu is prominent in your chart, the person will be a beggar or the person will be Yeah, one of the most successful person in their industry. As in simple their as that. industry. Right. Because they are not going to Right. stop anywhere in between. So that is the main difference. Right. So if isolation is Ketu is choosing isolation, it will either select complete isolation from that thing, completely detached, no thinking, no thoughts whatsoever. Saturn Right. again, it can come, go, linger on, go away. See, not all Saturn prominent people are staying in Right. garbages or isolated No, no, places. no, no. 99, see if you see West, all of the West is associated with Yeah, Saturn, and actually it yeah, is the most clean place. But you will yeah. see, I have eh, seen.
In America, Canada, you will, Shani. when you go out, there are less people compared to India. Right, Where, right, right, so right. that is the type of isolation between Saturn and Ketu. Yeah, even Shani, I have seen Shani strong in someone's chart. That person go to the cold place, the Western countries. Shani, if Shani afflict you, a strong way, you go to the Western country. You know, Yeah, correct. Sun Saturn. right? So, sir, what is the difference between Moon Ketu, Jupiter Ketu, and Shani Ketu? Like in terms of thy blessings, like we like you said that Shani Ketu curse somebody, it's a curse. What about Jupiter Ketu and Moon Ketu? See, Jupiter Ketu and Saturn Ketu are both related to blessing and curses. Whereas Right, any other planet, when it comes to Venus Ketu, Moon Ketu, have not been right. recorded for such thing. So only for blessing and Okay. curses, Jupiter and Saturn. So इसके लिए गरीब की बद्दुआ नहीं लेनी है और गुरु की बद्दुआ नहीं लेनी. That is the concept. Okay, so both can give a curse and both could give a blessings, right? मतलब आपने टीवी सीरियल में देखा सबसे ज्यादा कर्ज हाँ, देते ही साधु लोग थे. मोहिनी आई नाच के हाँ, गई उसको कर्ज दे दिया तेरा ये हो जाए तेरा वो हो जाए इंस्टेंटली. right, right. Because I have heard somewhere that Shani Ketu could curse it and Jupiter Ketu could bless it. But Yeah, it is not that way. It is both ways, right? both ways. Both ways. Okay. Thank you, sir. Right. Next person, Haran Mahadev, sir. Haran Mahadev. Just one or two questions. Like you said, if we have to see if a planet is good or bad, so you have given couple of options. So in case of Shani, you have said that if we can stick to one thing for a longer period of time, that means we have a good Shani in our chart. So, Hmm. but what I've seen from a lot of charts, some people are good at some things for a longer period of time, but not with the other thing. Like you mentioned, servants or maybe a job or maybe a particular brand or a shop for that matter. So basically, you're referring to the Shani articles or Shani people. See, Bhartiji, the issue is that there is not one planet working in your chart, right? So there Hmm. are 12 houses, 12 zodiacs, Hmm. and how many planets? 9 planets as of now. 20 planets. 20 planets, definitely, but So, basically, we are studying that. yeah, so but only 99% people will only study these nine. But there are Right. actually 20 planets that work in your chart, right? So these 20 planets, these 12 houses, right? These 12 zodiacs, all are working. So they will change some aspect or the other. Then on top of it, transit is happening. On top of it, your dasha is happening, right? Okay. There's Vashfal, there's Tithi Pravesh. So all of these things are going to modify that flavor. So your Kundli can show the promise, but then all of these things will modify it. Something can be good, but because of some dasha or transit, that planet or that particular thing can afflict in a near future. Got Yeah, it. like I'll give you for example, one of my friends running ninth house dasha, right? Hmm. And he's been like Venus dasha, same as mine. He's in Venus dasha for the past 10 years, running the same dasha, ninth house. So he should do a lot of long travel. Hmm. There's not even a single long travel for the past 9 years. And in the 10th year, now there are travels. So the Huh. promise was there in the chart. When will it get fulfilled? That is another case Well, altogether. okay. तो And the further प्रॉमिस phase था of the कि ट्रैवल करेगा, प्रॉमिस था. okay. 9 साल तक पूरा नहीं हुआ, बट Transit नहीं है. टेंथ टेंथ दशा. तो ट्रांजिट तो आया ही होगा, सारे प्लैनेट्स तो घूम ही जाते हैं ऑलमोस्ट 10 साल में, सैटर्न को छोड़ के, Right. राइट? तो कहीं ना कहीं से तो एस्पेक्ट सैटर्न ने भी डाल ही दिया होगा, शिफ्ट हो गया होगा, जुपिटर ने एस्पेक्ट डाल दिया होगा. वर्षफल में नहीं आ रहा था मूवमेंट, हुआ ही नहीं मूवमेंट. So virtual is equally important. वेरी इंपॉर्टेंट. Will we cover virtual in this course? आधे लोगों Just को ये asking. नहीं पता कि एडल्ट्री कौन से हाउस से देखे जा रहे हैं, आप बोल रहे हो वर्षफल भी सिखा दो. सो Got advanced classes I'll teach 100% worshipful. great, sir. And so you mentioned that Ketu gets activated if we visit to Bhairav temple. Hmm. But you mean to say the Bhairavnath temple, right? See, there are multiple forms of Lord Bhairav also, right? हाँ. So any form Ketu will get activated. But then Rahu there are activate नहीं होगा.
some specific planets को बोल दिया जाता है कि this planet is related, जैसे योगेश जी gave the example of Dakshinamurti Shiva. So Hmm. specific forms can be activated, but overall Ketu will get activated. Mountains and Lord Bhairav. Lord Bharat. Acha, I was under the impression that it is more connected to Rahu because Rahu की remedies रहती हैं काल भैरव and भैरव temples के ऊपर. Rahu Ketu always are looking at one another, right? They are part of the same body, separated into two. So that is why. So Ketu ki remedies, 99 astrologers will never do Ketu's remedy. They will always ask you to do Rahu remedy, even if Ketu is in trouble. That's Okay. one And of the vice hidden versa? tips. And always. So Huh? they will never work on Ketu. I've told you, yantra, mantra, tantra, witchcraft, everything, isolation, elite personalities, Ketu. So जो good astrologers or the best astrologers, they will never touch Ketu. उससे पंगा लेना ही नहीं है केतु से. They will Okay. always do the remedies of Rahu. वो automatically sort out हो जाता है केतु कहीं ना कहीं. Sir, how would we know whether a particular person has a good Rahu and Ketu in their chart? So if you're traveling, right, if you're smart, but एक होता है ना ठगने वाला स्मार्ट और एक होता है गुड स्मार्ट. मतलब यू वेंट टू अ बैंक एंड यू सॉ कि 20 लोगों की लाइन लगी हुई है एंड आपने तीसरे चौथे से बात करके बीच में घुस गए. अब यहाँ पे किसका नुकसान तो हुआ नहीं और थोड़ी सी गुड गुड चालाकी यू डिड. सो यू हैव गुड राहु. इफ यू डू गुड चालाकियां, दैट इज योर गुड राहु. And if you get connected to the divine a lot, then you have good Ketu. Got it. Thank you so much, sir. Wonderful class. Sir, Thank you. sir, I have a question. Ji, go ahead. This is regarding Shani. For that matter, any negative planet, if they are strong, like for example, Shani ke case mein sorrows, delays, these are the indicators. Hmm. So what does it exactly mean? A negative planet is strong in the house, that's why sorrows and delays are happening, or it is bad because planet is badly placed because of that is happening. How do we interpret it? See, interpreting is a very difficult job in matters to this, because the problem is going to be you need to look at the whole chart. You cannot see when I'm teaching you, so I'm separating it that these are the houses, these are the zodiac, these are the planets, but they're not at all separate. All are working together at once. Everything is happening at the same time. Transits, dasha, varshfal, your planets, your zodiacs, your rashi, your nakshatra, everything is happening at once. It is your job to collect all the separate parts and then join it, and then you'll understand कि अब ये पॉजिटिवली वर्क करेगा, नेगेटिवली वर्क करेगा, होगा कि नहीं होगा. बट वही बात हो गई ना कि when I'm teaching you separate, but these are not separate. You have to combine it, and then only you can give the answer. Okay, so but these are the basic traits depending These on the are Janaka so yeah, combination. this is the base. Like Yes. अभी मैं कोई एक प्रिडिक्शन दे दूं बेसिक, राइट? तो एक बंदा उठ के बोल देगा सर करेक्ट, इट हैपेंड इन माय चार्ट. एक पर्सन बोल देगा सर मेरे साथ तो हुआ ही नहीं. अब किसी को, जैसे द एग्जांपल दैट आई गिव यू, 9th हाउस की दशा, लॉन्ग ट्रैवल होंगे, उसके 10 साल नहीं हुए बेचारे के, 9 साल नहीं हुए, 10वें साल में हो रहे. तो वो तो नो ही बोलेगा 9 साल तक, 10वें साल में जाके यस बोलेगा. So you have to see promise of the chart, when it will happen. Basically, Multiple things. a good structure, you have to combine it. So single se kabhi bhi you will never get the right answer. For learning, it is the base. That is the answer. Yeah, because I have seen 2-3 aspects which you have discussed. They are not exactly, they are counter in some charts I have seen. Like for some stability in the job, long term same job is not happening, but the servant is long term committed, same person. So this is So, like good so Shani 10th or house, bad Shani combination. so 10th house would be afflicted, but 6th house would be very strong. Servants, so you see from the 6th house, right? Okay. तो हाउस लेवल पे भी अफ्लिक्शन होगा, प्लेनेटरी लेवल, हाउस लेवल, जोडियक लेवल, नक्षत्र लेवल एंड ट्रांजिट वर्षफल, वो तो फ्री में साथ में आ रहे हैं. Okay, okay, got it. जी, दिस वे. Thank you. क्योंकि व्हाट आई रिमेम्बर फ्रॉम दिस, जैसे वन ऑफ माय फ्रेंड्स, सो आई टोल्ड हिम
कि थोड़ा मेंटल पीस खराब होगा, गाड़ियों का भी इश्यू हो जाएगा, एंड ट्रैवलिंग के थोड़े चक्कर लग सकते हैं, ठीक है, और काम पे प्रॉब्लम आएगी। तो ही सेड बचा ही क्या, सब तो बोल दिया। नॉन ज्योतिष, नॉन एस्ट्रोलॉजी। एंड देन आई टोल्ड हिम, तेरी लगन के ऊपर कुछ नहीं होगा, बॉडी के ऊपर कुछ नहीं होगा, वेल्थ, खाने के ऊपर मैंने कुछ नहीं बोला, एजुकेशन, स्किल्स, लव लाइफ, रिलेशनशिप्स के ऊपर मैंने कुछ नहीं बोला, तेरे पेट्स, मामा, रिलेटिव्स पे कुछ नहीं बोला, ब्रदर, यंगर ब्रदर, एल्डर ब्रदर, इनके बारे में कुछ नहीं बोला, इनकम स्ट्रीम्स, गेन्स, डिजायर्स, इनके ऊपर कुछ नहीं बोला, 12th हाउस के। तो यू सी दैट 12 हाउसेस विद सो मेनी एट्रीब्यूट्स। मल्टीपल एस्पेक्ट्स। हाँ, तो बोले एक यहाँ से हो रही है तो दूसरी यहाँ से हो रही है। अब हॉस्पिटल 12वें घर से देख रहे हैं, बट क्रॉनिक बीमारी तो 8वें घर से आ रही है ना। हाँ, तो 12वें घर में देख के मैं 8वें घर की चीज नहीं बोल सकता, 8वें घर को देख के मैं 12वें घर की चीज नहीं बोल सकता। बट जब मैं पूरी कुंडली देखूंगा ओके, तो सब समझ आएगा कि क्रॉनिक बीमारी तो है, बट जब 12वें घर के साथ कनेक्शन नहीं बना रही तो हॉस्पिटल नहीं लेके जाएगी, घर पे ही रहता रहेगा बेचारा। ठीक है, ठीक है, got it. हाँ Another जी, thing, you said that sun tries to separate what? रिफ्ट, रिफ्ट, दरार डालना, दैट इज द अच्छा, between सन। persons. सन, सैटर्न एंड राहु आर द सेपरेटिव फोर्सेस। Okay, They wherever they will go, they will separate you from that thing. from that in that house, you can say हाँ, अगर मैं attributes of कंबाइन that. हो गए तो फिर तो उस चीज से पक्का ही सेपरेट कर देंगे। आई मेड अ वीडियो ऑन इट ऑन यूट्यूब, यू कैन सी, एग्जांपल्स हैं उसमें। ठीक है, and one more जी, last doubt. Rahu has got this negative trends in house characteristics like gambling है, नहीं, नेगेटिव कहाँ पर है? sudden, गैम्बलिंग से लोग पैसा भी कमाते हैं, गैम्बलिंग इज आल्सो प्रोफेशन। sudden events. देयर आर So good पीपल हु news, आर because I'm प्रोफेशनल very पोकर प्लेयर। many. So, तो अब एडल्ट्री क्या राहु को लिंक्ड है? नहीं। अडल्ट्री मार्स, प्लैनेट वाइज, प्लैनेटरी लेवल मार्स, हाउस लेवल 4th हाउस। ओके, थैंक यू सब सर। सारा भांडा हमेशा राहु के सर पे फूटता है। दिस इज द हाँ, प्रॉब्लम ऑफ मॉडर्न डे ज्योतिष। वो करेक्ट, घूम फिरा के कुछ नहीं समझ आया, शैडो प्लैनेट है, ये करा रहा होगा जो भी करा रहा है। हाँ, वो बेचारा बैठ के देखा, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। राइट सर, थैंक यू सर। जी, Sir, I have a last question. Coming back to adultery, right? So adultery is afflicted fourth house and Mars, right? राइट, Uh, what about Moon? Like, do Moon has some role? Because Moon is a lusty planet. 100%। 4th हाउस Yeah. नेचुरली बिलोंग्स टू कैंसर। Right. मून की तो कितनी स्टोरीज है इन क्लासिक्स। Yeah, Moon, because I इसकी think वाइफ उठा Mars ली, is like, उसको छेड़ दिया। yeah, सब उठाया उसी ने ही है ना, तो वही मैं सोच रहा था। जी जी, Yeah. Thank you, sir. दिमाग में मस्ती होगी तभी तो ऐसे काम करोगे। Absolutely. मन में आना चाहिए ना विचार करने का। राधे राधे नेक्स्ट, सर, जी गुड राधे इवनिंग राधे, गुड इवनिंग। सर। और जैसे आपने बताया जुपिटर प्लस केतु का कंजक्शन बंदा किसी को ब्लेस कर दे तो ब्लेसिंग्स लग जाएगी। अगर ऐसे जुपिटर के एस्पेक्ट हो केतु पे तो भी वो सेम रिजल्ट देगा? सेम एसोसिएशन बेसिकली। whenever we say जुपिटर केतु, तो जरूरी नहीं होता कि इट इज सिटिंग इन वन हाउस, ठीक है, वो उसका एस्पेक्ट पड़ जाए, एक दूसरे की राशियों में बैठे हों, किसी भी तरीके से एसोसिएशन हो। अब वो ब्लेसिंग कितने लेवल पे लगेगी, वो कितना बड़ा एसोसिएशन होगा। बहुत चिपक के बैठे हुए हैं, कंजक्शन है, और 5 डिग्री के अंदर का कंजक्शन है, 10 डिग्री के अंदर का कंजक्शन है, ऑफ कोर्स बहुत स्ट्रांगली बैठे हुए हैं, बहुत ज्यादा इफेक्ट होगा। एस्पेक्ट है, पर वही बात है कि जुपिटर 3-4 डिग्री का था, केतु के ऊपर एस्पेक्ट डाल रहा था, केतु 9th एस्पेक्ट तो पड़ रहा था, बट केतु उसके 29 डिग्रीज, 28 डिग्रीज, मतलब मैं रिवर्स का बोल रहा हूँ, तो वो 2 डिग्री का होगा तो हम उसको -30 से गिनते हैं, तो इट विल बी एट द एंड, तो वो फिर वो थोड़ा सा लाइट हो जाएगा। इट डिपेंड्स कि कितना स्ट्रांग है। ओके, और अगर सैटर्न प्लस सॉरी केतु प्लस सैटर्न प्लस वीनस हो तो कर्स का रोल कम हो जाएगा या फिर? अरे कर्स का कहा, वो खुद ही साधु है। दैट इज अ तपस्वी योग, व्हाट यू आर रेफरिंग, सैटर्न केतु वीनस। अगर आप में है तो घर छोड़ने की तैयारी कर लो। नो सर, नो सर, थैंक यू सर। So Saturn, Ketu, Venus, this is basically a tapasvi yoga. थैंक यू सर।
गुड इवनिंग सर। जी जी, गुड इवनिंग। सर मेरा क्वेश्चन था लाइक यू सेड एवरी प्लेनेट हैज अ प्रत्येक देवता like sun for Mars, Dakshinamurti for Jupiter. Sir, 10 महाविद्यास are also connected to all the planets. तो मेरा क्वेश्चन था कि इनकी वर्शिप कब करनी चाहिए, लाइक व्हेन वी हैव टू वर्शिप स्पेसिफिकली महाविद्या, नॉट प्रत्येक देवतास। देखो, 10 महाविद्यास आर 99% रिलेटेड टू तंत्र। ठीक है, यस। ठीक है। तो इसके लिए तो दे आर बी ना वेरी सेपरेट पार्ट फ्रॉम सोसाइटी। तो इसके लिए जितना हम ब्रह्मा विष्णु महेश कर रहे हैं यहाँ पर, गणेश जी ले आओ, कार्तिकेय ले आओ, कभी कभी यू विल नेवर हियर अबाउट शक्तिस कि ये वाला फॉर्म ले आओ, ये फॉर्म ले आओ। ठीक है, आई थिंक मेरे को नाम नहीं याद आ रहा, आई थिंक 6th फॉर्म या 5th फॉर्म तो एग्जैक्टली रिलेटेड टू ही तंत्र होता है। ठीक है, अब इनको भोग कैसे लगते हैं? अब इनको भोग एक 10 महाविद्या में से, आई विल नॉट गिव यू वेरी क्लियर डिस्क्रिप्शन, बट 10 महाविद्या में से एक को जूठा भोग लगता है। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या है कि देज आर वेरी सेपरेट फ्रॉम द मेन स्ट्रीम। तो इसके लिए तो इनको कनेक्ट नहीं किया जाता। सेकेंडरी, दिस इज ऑल रिलेटेड टू तंत्र। अब प्रॉब्लम क्या है, तंत्र इज नॉट ब्लैक मैजिक। तंत्र पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, बट वही बात है, जिसको आ जाए वो पॉजिटिव फिर रहता नहीं है, तो ही विल डेफिनेटली गो इनटू द नेगेटिव डायरेक्शन। तो फिर व्हाट पीपल डू इज, जैसे अब डेथ डेथ की हम बात ही नहीं करते। ठीक है, तो वही है, आपको मैं सिखाऊंगा ही नहीं डेथ का। आप डेथ वाला टॉपिक लेके नहीं आओगे, ना खुद की नींद खराब करोगे, ना मेरी नींद खराब करोगे। ठीक है, ना ही जिसको बता दोगे कि भाई तू मरने वाला है, उसकी भी नींद नहीं खराब होगी। तो मैं सिखाऊंगा ही नहीं, आप सीखोगे ही नहीं। तो सेम इज द कॉन्सेप्ट ऑफ 10 महाविद्या। उनको हम लेके आएंगे ही नहीं, तो तब तक तंत्र की बात उठेगी नहीं। अब आपने नाम लिया, मेरे को कम से कम 5 बार तंत्र बोलना पड़ा एक एक्सप्लेनेशन में। अब कितनों का मन कर गया होगा कि सर हमें तंत्र सिखा दे यहाँ पर बैठ के। हाँ, तो इसके लिए लेके ही मत आओ। तो दैट इज द मेन थिंग। यस सर। और सर लाइक व्हाट इज द डिफरेंस इन चार्ट ऑफ अ नॉर्मल वेल्थ एंड दोज हु आर बिलियनियर्स, लाइक व्हिच इज द मेन प्लान? कुछ भी नहीं, नो नो डिफरेंस एट ऑल। कोई चार्ट अच्छा चार्ट होता ही नहीं है। सबको मार पीट के घिसपिटा कर करके सेटिंग करनी पड़ती है। एवरी चार्ट हैज अ लूप होल एंड यू हैव टू फाइंड दैट लूप होल फॉर मनी। अब आई विल गिव यू वेरी गुड एग्जांपल। सिक्स्थ हाउस, सिक्स्थ हाउस का जो लॉर्ड है, ठीक है, वो जहां पर जाके बैठेगा वहां पर कमी करेगा। ठीक है, अब वो अब अब इसमें थोड़ा सा दिमाग लो, आई गिव ए वेरी गुड हिंट। अब इसको कंट्रोल कर लो, कमी चलेगी जिंदगी में। तो अब आप देखो आपको कौन सी कमी, किस चीज की कमी है और कैसे सॉल्व करोगे। दैट इज द मेन थिंग। नहीं समझ आ रहा, यू कैन बुक अ प्राइवेट कंसल्टेशन, आई विल हेल्प यू। ठीक है, सो दिस इज द मेन थिंग। तो मतलब कुंडली देखना पढ़ना, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। अब कुंडली के साथ आप मैन्युपुलेट कर रहे हो कि अच्छा ये चीज यहाँ हो रही है, ये चीज यहाँ हो रही है, तो इसको घुमा के ऐसे कर लेते हैं, चलो। ठीक है, सो दैट इज गोइंग फाइंडिंग द लूप होल। तो वो दैट इज द मेन ज्योतिष जो लोग समझते हैं कि हम सर के पास गए, प्रॉब्लम बताई, सर ने सोल्यूशन दिया, एंड देन ठीक है। तो दैट फाइंडिंग द लूप होल इज द मेन थिंग, बट ऐसा कभी नहीं होता। ठीक है, एक टाइम पे था कि हमारे पास भी कुछ नहीं होता था। अब मैं मैकबुक पे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, 2-3 आईफोन रखे हुए हैं, आईपैड पे रखे हुए हैं, ठीक है, एयरपॉड लगे हुए हैं, बट देयर वाज अ टाइम जब नहीं होता था। फर्स्ट लैपटॉप ऑफ माइन वाज वो 18,000 का, पता नहीं लेनोवो का था कि डेल का था, आई डोंट इवन रिमेम्बर। सो इट्स तो वो चार्ट तो वही है, पर्सन तो वही है, सब वही है। जितने लोग अमीर लोग हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यू गो एंड सी, अब बोलो कितना बेवकूफ आदमी है ये। स्पेशली अमीर इंसान, वो उतना ही बड़ा डम होता, उनमें कुछ स्पेशल नहीं होता कभी। दे जस्ट हैव बाय लक फाइंड आउट कि अच्छा ये करने से मेरे को पैसा आता है, या और वही काम ज्योतिष का है। यू गो अहेड, यू फाइंड आउट ये करने से पैसा आएगा, एंड यू गो अहेड एंड डू इट। थैंक यू Sir, सर। coming back to this question of rich and poor thing, do you think little bit of difference is made by Mercury, like prominent इन positions of Mercury? व्हाट सेंस? Like if the Mercury is, posited very good in divisional or somewhere, it could be a little bit differentiation. नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। Okay. तो यू हैव टू फाइंड द लूप होल कि कैसे इसको मैं सॉर्ट हम्म, आउट करूंगा। आपको देखना है कि यू हैव टू सी 2 थिंग्स, पैसा आएगा कहाँ से और पैसे को रोक कौन रहा है। ठीक है, जी। बस।
कितने लोगों का वीनस एग्जॉल्टेड होगा, नॉर्मल सी दुकान चला रहे होंगे, नॉर्मल से घर में बैठे होंगे, डर नहीं होगा, Right, right. क्या कर लिया अच्छे वीनस के साथ, ठीक है। I have seen a chart, four exalted planet. Guy got four exalted planet and died in a severe poverty. So exalted planet. तो क्या कर लिया एग्जॉल्टेड प्लेनेट लेके, और सेम नीच के Right. प्लेनेट तो ज्यादा पैसे दे जाते, पैसा कमाने नीच के के लिए ज्यादा दे रहे हैं यू हैव टू हैव नीचता इन यू। कैपिटल। जब आप यस, आपका बिहेवियर ही नीच नहीं है, आप पैसा ही नहीं कमा सकते। एग्जॉल्टेड बंदा क्या कमाएगा, कुछ नहीं कर सकता वो। थैंक यू सर। ओके, गो अहेड सोनू जी, देन विल कंक्लूड। या सर, मेरा क्वेश्चन ये था, आपने सिंबल्स बताए आज प्लैनेट्स के, तो एक कुछ लोग टैटू एक्टिवेशन भी यूज करते हैं लाइक ऑन डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, तो क्या उनमें हम यही सिंबल्स यूज करते हैं अगर हमें कुछ पर्टिकुलर प्लैनेट्स को एक्टिवेट करना है एट अ पर्टिकुलर लोकेशन और इन अ पर्टिकुलर हाउस? सी फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको पता होना चाहिए कि विच पार्ट इज रिलेटेड टू विच प्लैनेट, विच ज़ोडिएक, वो तो बड़ा इजी है, अकाल पुरुष की जी। कुंडली के हिसाब से आप देखोगे। बट देन वही बात है कि आपका बट लगन सेम नहीं होगा, नॉट एवरीबडी वुड बी एरीज लगना। सेकेंडली ऑफ कोर्स अब आप नंबर से यूज कर सकते हो, सिंबल से यूज कर सकते हो, उस उनकी चीज यूज कर सकते हो। सो इट इज सी दिस आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ डूइंग रेमेडीज। कुछ लोगों को आपने गले में पेड़ की जड़ पहने हुए देखा होगा, कोई रेमेडी देगा कि पेड़ लगा लो, कोई रेमेडी देगा कि ये वाले प्लेनेट का जेमस्टोन पहन लो, वन और दी अदर थिंग, सेम थिंग। तो मतलब रेमेडीज है ऑन डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स। ओके। एंड सर, सेकंड क्वेश्चन ये था कि वो जैसे हमने सैटर्न केतु और जुपिटर केतु अगर दोनों ही कनेक्टेड हों, सैटर्न एंड जुपिटर, तो देन बोथ ब्लेसिंग एंड कर्सेस विल वर्क। केतु जुड़ रहा है कि नहीं? ये विद केतु अगर वो एस्पेक्ट हाँ, से जुड़ दोनों रहे हो। चीजें, दोनों चीजें। चीजें। ओके। या आई थिंक दैट्स ऑल सर, थैंक यू। So Sir, one last question. Sorry for the long question session. But that ear piercing, many people say that pierce ear because it's a sanskar in Hindu dharma and all that stuff. But then there is other side that it's a third house and the 11th house get afflicted because of it. So is there like what is the link between these things? see here piercing is very simple, very easy. ये 16 संस्कार में आता है। हाँ, आता है। कब कराना है? बचपन में कराना है। बड़े होके करा रहे हो, फायदा होगा? नहीं होने वाला। कराने का मतलब ये होता है कि आपको सेक्रेट साउंड्स सुनाई दे। सेक्रेट साउंड्स मतलब मंत्र भजन, ठीक है। जैसे मैं आपको चीजें बता रहा हूँ, तो ये Right, जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ठीक है, ये सारे आपके कानों में पड़े, आपको समझ आए, ये right, उसके लिए कराया जाता है। अब बचपन में तो कराया नहीं होगा बहुत लोगों ने, right, ठीक है, क्योंकि right, right. पेरेंट्स करवाते नहीं हर लिए। अब जैसे पंजाबियों में नहीं होता, ठीक है। नहीं होता, नहीं तो होता। अब वो बड़े होके भी फिर इट डजंट मेक एनी सेंस, तो वो होता नहीं। उसके बाद में अब आप समझो कि करा दिया, तो फिर अब वो लिंक हो गया, एक आपका राइट है, एक आपका लेफ्ट है। अब फिर आपको पोजीशन देखनी होगी चार्ट में कि वो अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है, तो फिर उस अकॉर्डिंग आप पियर्स कराकर वहां पर आप कुछ भी मतलब स्टेट डाल सकते हो, स्टोन डाल सकते हो, वो आपके ऊपर है, Right, ठीक है। thanks. बट इट विल एक्टिवेट थर्ड एंड 11th हाउस, बोथ आर उपचयस। Yeah, and do it separate you from like younger brother or something happens? Like if you do the right ear, डिपेंड्स ना कि उस हाउस की कंडीशन क्या है, उसका लॉर्ड क्या है। हाउस इज right? अफ्लिक्टेड, लॉर्ड इज अफ्लिक्टेड, यू गो अहेड वेयर इट, फिर आप बोल रहे पता नहीं प्रॉब्लम्स आ गई, Hmm. Thanks, sir. ठीक है। ओके, थैंक यू एवरीबॉडी, एंड विल डू